In the previous chapter, that is life process, we have studied many life process of our body. Along with all those processes, our body remains healthy and the mechanism work properly. But वो सारे life processes को एक बहुत ही अच्छा system हमारी body में control और coordinate करता है. Not only those life processes, हमारी body जो भी response देती है, जो भी perceive करती है, वो सारी चीजें कोई तो system control करता है and accordingly coordinate करता है. Fine? And उस system के two parts है, or you can say there are two systems. Fine? So very simple. All the actions or mechanism of our body is controlled by two coordinations or two systems. Fine? One is called as nervous system or it is called as nervous coordination. तो पहला coordination क्या है? Nervous coordination. Second coordination is hormonal coordination, which is also known as chemical coordination. So again, I am repeating, student. There are two coordination in our body, fine, or two mechanism which is controlling and coordinating all the actions taken by the body in response to the environment. So कौन से दो coordinations है? Nervous coordination and hormonal coordination. अब ये दोनों मिलके हमारी body के mechanism को control करते हैं. So in this chapter we have to study this two mechanism. And again ये chapter में भी two parts है. One in human being, one in plants. Life process में हमने कैसे पढ़ा था? पहले plants का पढ़ा था and then ह्यूमन बीइंग का पढ़ा था. अब यहाँ पे उल्टा है. पहले मैं आपको ह्यूमन बीइंग का पढ़ाऊंगी एंड देन आई विल टीच यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स बिकॉज दे आर पोल्स अपार्ट. वहां पे थोड़ी सिमिलैरिटी थी, इसके लिए मैं पहले वो पढ़ा रही थी क्योंकि इजी था वो. बट यहाँ पे थोड़ा नॉट थोड़ा बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है एक्सेप्ट हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि प्लांट्स को नर्वस सिस्टम नहीं है बट ये वाला सिस्टम प्लांट्स को है. तो पहले हम ह्यूमन बीइंग में पढ़ेंगे एंड देन इन प्लांट्स. सो आई विल लिस्ट इट डाउन. नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमें क्या क्या जानना है एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में हमें क्या क्या जानना है. फाइन. इन केस ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट यू नीड टू नो द बेसिक यूनिट ऑफ दिस सिस्टम. Fine? That is nervous system. This is also called as nervous system. तो नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट क्या है? इट इज न्यूरॉन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल्स. क्या कहते हैं इसे? नर्व सेल्स. तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में. देन विल स्टडी अबाउट नर्व्स. What is the basic difference between nerve and neuron? I am not writing nerve cell. I am just writing nerve. Fine. So what is the basic difference between neuron and nerve? वो पढ़ेंगे. Then we are going to study the two types of conduction, electrical conduction and chemical conduction of impulse. तो next आएगा हमारा conduction of impulse. And next we are going to study receptors. Receptors के बाद हम पढ़ेंगे brain, parts of brain, and then we are going to study, fine, last but most important, that is reflex action. आपके टेक्स्ट बुक में reflex action brain के पहले, but मैं आपको brain पहले पढ़ाऊंगी and then reflex action. Why? Because brain का भी उसके अंदर coordination है. Fine. So these are the things which we are going to study in nervous system और nervous coordination. In case of hormonal coordination, आपको दो ही चीज जानने की जरूरत है. पहले तो hormones, the chemical messenger. Hormones are also known as chemical messenger of our body. That is why this is also called as chemical coordination. Fine? This is called as chemical messenger. And then how the action is taken by the hormones, or you can say the functions of hormones, how they control our body mechanism. ये हम पढ़ेंगे. And last में हम पढ़ेंगे what we are going to study, the distinguish between these two. तो पहले detail about nervous coordination, detail about hormonal coordination. Again I am repeating, this is related to human body, not plants. Right now I am teaching you only human body control and coordination. Fine. So this is the list. Write it down. This will be easy for you to understand the chapter क्योंकि आपके chapter में सब कुछ mix करके दिया हुआ है. Fine. तो पहले न्यूरॉन, फिर नर्व, फिर conduction of impulse, receptors, brain and reflex action. Fine. Then over here hormones and their action and function.
Now I'm starting with the nervous system in human being. So list याद है आपको? Under nervous system first हम क्या पढ़ेंगे? Neuron. Neuron is structure and functional unit of nervous system. जैसे किडनी का क्या है? Nephron. तो neuron is structure and function unit of nervous system or nervous coordination. So first we need to study those basic unit. Try to recollect student tissue chapter in 9th standard. उसमें आपको 4 types of tissue पढ़ाया था. Epithelial, muscular, connective and nervous tissue. तो कुछ याद आ रहा है वो स्ट्रक्चर? तो एक बार फिर से रिकलेक्ट करके लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल. आई एम ड्राइंग इट, ऑब्जर्व इट केयरफुली. दिस विल बी द टिप्स फॉर यू और यू कैन आल्सो ड्रॉ इट साइमल्टेनियसली. आई एम स्टार्टिंग. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. Fine. Complete this part. This is cyton part which I am trying to complete. Okay. So this is axon part which I am extending. Fine. Axon extends into branches. And last में ये ऐसा knobs form करता है जिसका मैं labeling आपको बाद में करके explain करूँगी. Fine. So this is a cyton part. Cyton part extend to form. Fine. डेंड्रॉन. साइटोन का शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है, उसको कहते हैं हम डेंड्रॉन. सो दिस इज डेंड्रॉन. फाइन. ट्राई टू ड्रॉ लाइक दिस वे. Okay, this is a simple tip. Without erasing, you can draw it very quickly. Fine. So these are dendrons of cyton. You have to just extend it like this and your dendrons are completed. Fine. ये हो गया dendron. Dendron के ऊपर branches होते हैं student जिसे हम कहते हैं dendrites. Fine. These are called as dendrites. So you will branch it. Fine. ये हो गया dendrites part. Labeling भी करूँगी. But I am showing you the tips of drawing the structure of neuron without erasing or in a very less time. Fine. Because you don't have time in exam to complete the structure very quickly or आराम से. Fine. Okay. Now ये हो गया आउटर स्केलेटन, साइटोन एंड एक्सॉन. अब साइटोन के अंदर क्या है? फीलिंग्स कर देते हैं. साइटोन के अंदर एक है बड़ा सा सेल इन द सेंटर एंड द साइटोप्लाज्म्स आर ग्रैन्युलेटेड. तो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे. ये हो गया साइटोन पार्ट. फाइन. ओके. अब आते हैं एक्सॉन पे. फाइन. एक्सॉन इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव covering, or you can say there is a deposition for extra protection which is called as myelin sheath. इसे क्या कहते हैं? myelin sheath. Fine. So we completed with the myelin sheath. Okay. Now after all, every cell have a protective covering. Same way neurons are also having protective covering. इसके ऊपर एक protective covering अलग से भी है. Fine. That protective covering is known as neurolemma or neurolemma. Fine. Okay. This is only till here. This is a protective covering for neuron and this is a nerve end. अब मैं इसको लेबल करके पूरा पार्ट कंप्लीट करती हूँ. Fine. So first, the neurons are divided into two major part. न्यूरॉन के दो मेजर पार्ट होते हैं. One is called as cyton and second is called as cytoplasmic extension. क्या कहते हैं हम? cytoplasmic extension. दोनों में डिफरेंस क्या है अभी मैं लेबल करके आपको बताती हूँ. फाइन. ओके. सो ओवर हियर दिस इज डेंड्रॉन. दिस इज डेंड्रॉन. फाइन. नेक्स्ट वी हैव दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. इसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स. द ब्रांच ऑफ डेंड्रॉन. फाइन. Next we have the internal content of cyton. Fine. The internal content shows one enlarged nucleus. So this is enlarged nucleus and nucleus is surrounded by the granulated cytoplasm. Fine. कैसा cytoplasm है? Granulated. Fine. So you have to write it down. Granulated cytoplasm. ये चारों पार्ट किसके अंदर आएंगे? दिस विल कम इन साइटोन. ओके. नाउ दिस ग्रैन्यूल्स आर गिवन स्पेशल नेम स्टूडेंट. उस ग्रैन्यूल्स के स्पेशल नाम क्या है? नीजल्स ग्रैन्यूल. क्या नाम है? नीजल्स ग्रैन्यूल. फाइन. ये आपको याद रखना है. ये चारों पार्ट को मिला के देयर इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज साइटोन. फाइन. व्हिच स्ट्रक्चर इज फॉर्म? साइटोन.
साइटोन का दूसरा नाम भी है जो मैं यहां पे लिखूंगी. फाइन. ओके, देन कम्स द axon part. Fine. In the center we have axon, which is a long cytoplasmic extension. Fine. Axon is surrounded by a layer or deposition of a structure which is called as myelin sheath. इसे क्या कहते हैं? myelin sheath. Fine. This myelin sheath is showing gap or you can constriction at a regular interval. You can see यहाँ पे constriction है at regular interval. Fine. These constrictions are called as node of Ranvier. क्या कहते हैं इसे? Node of Ranvier. Next, above all this structure, there is a protective covering which is called as neurolemma. Fine. इसे क्या कहते हैं? Neurolemma और neurolemma. न्यूरीलेमा और न्यूरोलेमा. Fine. Okay. Next, the last part or the end of the axon is called as axon end or axon terminal, or it is called as telodendron. What it is called as? Telodendron. तो ये हमने क्या कंप्लीट किया? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. नाउ वी नीड टू स्टडी दिस. फाइन. वेरी सिंपल, मैंने पहले ही चार्ट बना दिया है. न्यूरॉन के दो मेजर पार्ट होते हैं. एक होता है साइटोन एंड दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन. फाइन. स्पीकिंग अबाउट साइटोन, साइटोन के चार पार्ट होते हैं स्टूडेंट, जो वहां पे आप डायग्राम में देख सकते हैं. पहला पार्ट है डेंड्रॉन, दूसरा पार्ट है डेंड्राइट्स. मैं बाहर से अंदर जा रही हूं. फाइन. डेंड्राइट्स. तीसरा पार्ट है उसका न्यूक्लियस, एनलार्ज न्यूक्लियस. एंड चौथा पार्ट क्या है उसका? ग्रैन्युलेटेड साइटोप्लाज्म. सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन नीजल्स ग्रैन्यूल्स. यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? नीजल्स ग्रैन्यूल्स, बट इसका मेन टर्म यहाँ पे आएगा ग्रैन्युलेटेड साइटोप्लाज्म. फाइन. स्पीकिंग अबाउट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन स्टूडेंट, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन टू टाइप्स के हैं. एक है शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, एक है लॉन्ग. तो शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन को कहते हैं डेंड्रॉन एंड द लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज एक्सॉन. फाइन. वेरी सिंपल. सो न्यूरॉन टू पार्ट्स. नाउ आप सोच रहे होगे डेंड्रॉन वहां पे भी है, डेंड्रॉन यहाँ पे भी है. यस, क्योंकि साइटोन के अंदर आ जाता है डेंड्रॉन, तो दोनों जगह है. फाइन. डेंड्रॉन यू कैन से शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, तो इसका पार्ट भी है. साइटोन का दूसरा नाम है पेरिकैरियन. साइटोन का दूसरा नाम है पेरिकैरियन. तीसरा नाम है सेल बॉडी. सो यू हैव टू बी थरो विथ ऑल द थ्री टर्म्स यूज्ड. सिंपल. फाइन. नेक्स्ट, what are dendrites? Branches of dendron. What is dendron? Short cytoplasmic extension. Dendron क्या है? Short cytoplasmic extension. Fine. You will write down same thing over there also. What is axon? Axon is long cytoplasmic extension. Fine. वो क्या है? Long cytoplasmic extension. Fine. Next. अब आपको यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करना है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कैसा है? एनलार्ज है. फाइन. एंड साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ नीजल्स ग्रैन्यूल्स. फाइन. इतना हो गया डिस्क्रिप्शन साइटोन का. अब डेंड्रॉन इज शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन हैविंग अ ब्रांचिंग कॉल्ड एज डेंड्राइट्स. फाइन. एक्सॉन का आप यहाँ पे देखो क्या क्या दिख रहा है एंड आप उसको खुद ही लेवल कर सकते हो. इसका न्यूक्लियस अलग से होता है. माइलिन शीथ इज अ एक्स्ट्रा डिपोजिशन फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. फाइन. नाउ एक्सॉन में सबसे ऊपर क्या दिखा? एक्सॉन के ऊपर पिंक कलर का क्या है? माइलिन शीथ. Why this myelin sheath is present? For extra protection. So over here you will write down point number 1. Axon show presence of myelin sheath. Next, the myelin sheath is showing constriction at regular interval. Myelin sheath क्या show कर रहा है? Constriction at regular interval. And those constrictions are called as nodes of Ranvier. Ranvier is the name of a scientist. Fine? Ranvier नहीं लिखना है, Ranvier. Okay, Ranvier is a name of a scientist who has discovered this thing. Last, the ends of the neuron is known as axon and axon terminal or telodendron. So this is all about the structure of neuron. इतना आपको एग्जाम में लिखना है, ऐसे ड्रॉ करना है. फाइन. अब न्यूरॉन का फंक्शन क्या है?
फाइन। तो इसका फंक्शन है रिसीविंग द इम्पल्स एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। फाइन, क्या है फंक्शन? रिसीविंग द इम्पल्स एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स कौन रिसीव करेगा? इम्पल्स विल बी रिसीव्ड बाय दी डेंड्राइट्स। ये समझो कि एक फिंगर है, फाइन, किसी के हाथ या फिंगर से कोई टच कर रहा है आपकी बॉडी को, यू विल कम टू नो हाउ, क्योंकि डेंड्राइट्स इज गोइंग टू रिसीव दैट इम्पल्स, फाइन, एंड डेंड्राइट्स के थ्रू वो कंडक्ट होगा, इट विल बी कंडक्टेड इन द एक्सॉन एंड ब्रेन को वो मैसेज जाएगा। अब ये कंडक्शन जो होता है इम्पल्स का, इट इज ऑफ टू टाइप्स, जो हम बाद में पढ़ेंगे। सिंपल, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन? रिसीविंग द इम्पल्स एंड कंडक्टिंग द इम्पल्स इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन receives the impulse? Dendrites. Which part conducts? Axon. So here we completed the structure and functions of neuron. Now we are going to study the difference between neuron and nerve.